So last lecture, what we have discussed about the representation of the relation. ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी आपका सेट जो है, अगर वो रिलेशन के अंदर आपकी पेयर जो होगी, so वहाँ पर मैट्रिक्स में you have to represent one, and if your pair is not belongs to does not belongs to your relation, then you have to simple put the zero. So there are actually two set. ठीक है, उसके बेस पे एक एग्जांपल भी ये किया था, सेट A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 1 2. So आप अगर रिलेशन बनाओगे, एक्चुअली यहाँ पर आपको रिलेशन ऑलरेडी प्रोवाइड है, आपको जो है यहाँ पर रिलेशन प्रोवाइड किया गया है कि 2 1 3 1 and 3 2. So you can easily make the matrices. Matrix R, you can say matrix MR is equal to 0 0. देखो यहाँ पे 2 1 लिखा है, यानी कि मैंने कल भी बताया था आपको, you have to represent this one. To represent, first element is row and second one is column, so you can, this one is this. Okay, after that 3 1, 3 1 is equal to this 3 2, यानी कि row 3 column 2 is equal to this. Okay, so we can easily make the matrix if we have relation. देखो एग्जाम के अंदर आपको सिंपल सेट जो है, दो सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बेस पे आपको ये देखना है कि आपका रिलेशन कौन सा है, आइदर इट मे बी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर कोई भी एक वर्बली भी आपको दिया जा सकता है. ठीक है,
सो यू हैव टू मेक द फर्स्ट ऑफ रिलेशन के बाद आपको बनाना है मैट्रिक्स. आई होप this example is clear now. Let's see another example. So in example number 2, write down example number 2. uh, let capital A is equal to A1 A2 A3 and let capital B is equal to B1 to B5. पहले एग्जाम्पल लिख दो. which ordered pairs are in the relation are represent by the matrix. सो यहाँ पर एक्चुअली पहले काम करो, क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका लॉजिक क्या. तो एक्चुअली यहाँ पर आपको दो ही सेट प्रोवाइड किए जाएगी क्योंकि आपको मैट्रिक्स बनाना है. सो यहाँ पर एक्चुअली ये मैट्रिक्स दिया है, आपको ये बताना है कि आपका रिलेशन आर कौन सा बनेगा. हियर यू हैव एम आर, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पेयर्स. ओके, you can say that कि देखो यहाँ पर सेकंड कॉलम and you can say first row second column. First row, this one is first row, this one is second column. So this one is, let me एक काम करता हूँ, ये वाला हो गया. This one is A1, this one is A2, this one is A3, this one is B1, this one is B2, B3, B4, this one is B5. ओके, स्क्रीन पे देखो B5. Now you can say that ये वाला जो एलिमेंट बनेगा, this one is A1, B2, this one is A2, B1, this one is A3, B3, this one is A2, B3, this one is A3, B3, this one is A2, B4, and last one is A3, B5. So this is the relation capital R, and you have to check also there are there are 7 pairs. ठीक है, so ये हो गई 3, ये हो गई 3 plus 3 6 and last one 7. so लास्ट में क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना कि पेयर्स जो है सारी के सारे एग्जिस्ट है कि नहीं. देखो एग्जाम ये आप रफ में ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला ये एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट इन रफ पेज एंड you have to simple write the matrix. So write this solution.
Okay, so this one is second matrix. देखो यहाँ पर जो मैंने सेकंड मैट्रिक्स लिखा है उसके अंदर यू कैन आइडेंटिफाई दी वन एंड जीरोस. So you have to make the relation number two. You can say this one is R1. Let me. This one is, you can say this one is R1 relation one. And now you have to write relation number two. Relation number two. This one. ठीक. सो इसका सॉल्यूशन लिख दो कि यहाँ पर एक्चुअली सेट आपके पास सेम ही दिया है, बट यू हैव टू राइट द रिलेशन नंबर R2. दिस वन इज योर मैट्रिक्स. I think there you have 8 pairs. Okay, in relation number R2 you have 8 pairs, so find it. Yes, sir. ठीक है.
1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. So let's see. Next one is this one is reflexive relation. Suppose that if you have matrix like this and your diagonal is only one, okay? If your diagonal contains the value of one and the other elements are zero, then this type of matrix is known as reflexive relation. Same you can say for 0 1 matrix for a symmetric relation. अगर आपके पास this one is like diagonal element and both side upper and lower side you have one and a zero as well, then this type of matrix is considered as symmetric matrix. Last one is anti-symmetric. If you have like 0 1 1 0 and 0 0, so this type of matrix is known as anti-symmetric relation. So जल्दी से ये definition लिख लो. Simple example and you have simple matrix, but you have to verify whether your relation, according to your relation, your matrix is reflexive symmetric or you can say anti-symmetric, both you can say. मतलब सारे के सारे मैट्रिक्स को देख के आपको देखना है. तो जो पहले अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करो, सेम तो पहला तो रूल ही है यहाँ पर कि आपका जो डायगोनल है, योर डायगोनल मस्ट बी वन. So you can say your diagonal is 1 1 1. So your matrix is reflexive. Okay. For symmetric, you have to check
You have to check 1100. So you can easily identify that कि देखो यहाँ पर है 1, so यहाँ पर भी है 1. This one is 0, so this one is also 0. This element is 1, this one is also 1. So your matrix is symmetric. अगर आपका matrix symmetric है then your relation is also symmetric. अब यहाँ पर ये देखना है कि ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं. योर मैट्रिक्स इज एंटी सिमेट्रिक और नॉट. तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि 0 1 मैट्रिक्स के अंदर ये 0 है तो ये सामने 1 होना चाहिए, अगर 1 है तो 0 होना चाहिए, और सेंटर में आपके पास क्या होना चाहिए 0 0. सो यहाँ पर अगर आप चेक करो, सो योर मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक. Your matrix is not, sorry, anti-symmetric. Your matrix is not anti-symmetric because according to definition you have 0 then 1 0 0, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, and this one is 1, this one is 0. So your matrix R is reflexive and your matrix is symmetric, but anti-symmetric relation is not possible according to definition. So write the example. जल्दी से example लिख दो.
So next lecture we will discuss about the next lecture we will see the remaining one. आज इतना ही है, ठीक है। तो काम करो जल्दी से, अपने वीडियोस जो है उसको ऑन कर दो ताकि मैं अटेंडेंस ले सकूं। And make sure you all have written in capital letter your enrollment number. Roll number 17, roll number 65, roll number 72. Camera is not working, okay. Sir, 72 present. Okay. Roll number 47, roll number 12, roll number 23, roll number 38, 62, roll number 64, roll number 9, 48, 22, 56. Sir, camera चाल दो. Okay, roll number 9 ne? Roll number 9, sir. Okay, clear. Roll number 64. 48. Okay, roll number. सर रोल नंबर 36 कैमरा नहीं चल दो. Okay. Sir, 47. Sir, 38. Sir, हमें एक वीडियो काम कॉल करो, कर दिए. हाँ बस वो लीव થઈ શકો છો. 37. Sir, 23. કેમેરો નથી ચાલતો. ઓકે, ચેક થઈ ગયું બધું. ચલો, Sir, 22. બધું થઈ Sir, ગયું. 47. કે 47 એબ્સેન્ટ મૂકી દેજો, ધ્યાન રાખજે. અરે સર નહોતો ચાલતો પેલા. અત્યારે દેખાણું મને, હે પછી તું નો તું કહીશ કે સર એબ્સેન્ટ મુકાઈ ગઈ, ચેન્જ કરું, હે જો અત્યારે ચાલે છે કમ્પ્લીટ. અત્યારે ચાલે છે ને, પેલા નહોતો ચાલતો. પેલા ચાલતો તો મેં ચેક કર્યું તું ને. ચાલતો હશે, ખબર નહીં હવે. હા એ તો વાત છે, ખબર નથી રહેતી કોઈને. કઈ નહીં, ચાલો હવે એટેન્ડન્સ પૂરાઈ ગઈ છે. 76, sir. ઓકે, હવે જે રોલ નંબર બોલ્યો એને એબ્સેન્ટ મૂકીશ. ઓકે, ચાલો બોલો હવે. અચ્છા, બધાને પ્રેઝન્ટ, ચાલો. ઓકે, ચાલો અત્યારે હું મીટિંગ એન્ડ કરું છું ને નેક્સ્ટ લેક્ચર ડિસ્કસ કરશું વધારે.